तो फॉर्मूला एम्पेयर्स लॉ से मैग्नेटिक फील्ड एंड डेंसिटी ऑफ सॉलिड और कल जो न्यूमेरिकल एक बीच में छूट गया था वो किया या नहीं किया नहीं किया पूरा बाद में क्या इसके लिए जगह छोड़ दो थोड़ी सी नेक्स्ट देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड एप्लीकेशन magnetic field due to solenoid. टेबल पे देखना इसका मैं से मार तो उधर रहेगा टेबल पे लैपटॉप के आगे बढ़ा होगा magnetic field due to solenoid. इनफाइनाइट सोलेनॉइड का करेंगे यहाँ से करंट आउटवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गया था मैं करंट ऐसे मार्क कर रहा हूँ इधर से आउटवर्ड इधर से इनवर्ड्स along the axis तो अगर एक्सेस पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो एम्पेयर्स लूप शुड पास थ्रू द एक्सेस रेक्टेंगुलर एम्पेयर्स लूप कंसीडर कर लो and it should pass through the axis of solenoid. Say amperes loop for QR and SP. Magnetic field and length are perpendicular. Because इसके लिए अगर मैं स्मॉल इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL करनी है ये DL की डायरेक्शन so we can say for PQ के लिए B और DL का एंगल 0 तो B डॉट DL हम कैलकुलेट कर सकते हैं QR और SP के लिए 90 तो डॉट प्रोडक्ट 0 एक्सटर्नल पॉइंट में सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड 0 तो हमें सिर्फ यही कैलकुलेट करना है PQ अगर लेंथ L है तो B डॉट DL विल बी DL नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल है तो इस एम्पियर्स लूप के अंदर कितने टर्न्स होंगे अगर ये लेंथ L है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है स्मॉल n so number of turns will be NL and current through amperes loop एक टर्न में से I NL turns है तो NLI so उसको अप्लाई कर देंगे so you can draw this diagram और स्कूल के सिलेबस में यही मेथड है हमने जो पहले वाला मेथड किया था वो स्कूल के सिलेबस में नहीं था जो हमने एक्सेस ऑफ सोलेनॉइड करके किया था सॉल्व अब सबका कल लास्ट एग्जाम ना कल के बाद तो किसी का नहीं है अभी खत्म हो सबके एग्जाम्स आप लोग करें आप लोग इसमें आते हैं बस फिर परसों से मॉर्निंग वाला बैच शुरू कर लेंगे और स्कूल एग्जाम्स अच्छे हो गए आपका फ्राइडे एंड मंडे दो दिन से आप चेस में लगा देगा बस
Second right. So consider an infinitely long solenoid. Consider an infinitely long solenoid with number of turns per unit length small n, with number of turns per unit length small n, and current I flowing through it, and current I flowing through it, and current I flowing through it. Magnetic field intensity. Magnetic field intensity is to be calculated on the axis of solenoid. Magnetic field intensity is to be calculated on the axis of solenoid. We assume PQRS as the Ampere's rule. With side PQ coinciding. We assume PQRS as Ampere's rule with side PQ coinciding with the axis of solenoid. If length PQ is L, then number of turns inside Ampere's loop, number of turns inside Ampere's loop will be NL. Using Ampere's law. So split curve P to Q, draw DN. ये 0 होगा because angle is 90. और ये टर्म 0 होगी because R2S will be 0 because external point का magnetic field 0 है.
This is to NI. Cyclotron. Cyclotron. स्कूल सिलेबस में नहीं है तो कॉम्पिटेटिव के लिए पढ़ना चाहिए. Cyclotron. पार्टिकल एक्सेलरेटर होता है. पार्टिकल एक्सेलरेटर एंड वो फील्ड यूज करेंगे. Electric field is used to increase the speed of charged particle, and magnetic field is used to make the charged particle move in the same electric field again and again. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ने स्पीड बढ़ानी है बिकॉज वर्क डन से जब इलेक्ट्रिक फील्ड कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड वर्क डन नहीं करता तो मैग्नेटिक फील्ड काइनेटिक एनर्जी भी नहीं बढ़ा सकता. मैग्नेटिक फील्ड का रोल सिर्फ ये रहेगा कि वो चार्ज पार्टिकल को बार बार उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आएगा जहां पे स्पीड बढ़ती है. तो मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज डायरेक्शन चेंज कर सकता था. तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है साइक्लोट्रॉन की, इट कंसिस्ट्स ऑफ टू हॉलो मेटालिक पीस. जैसे दो मेटालिक पीस. They are separated by small distance. Potential difference is applied across these trees. ऐसे सिंबल बनाने का मतलब that it's alternating. ये फिक्स नहीं है, ये नहीं है कि दोनों डी मतलब ये डी हमेशा पॉजिटिव है नेगेटिव है. इट्स एन ऑल्टरनेटिंग फील्ड. Magnetic field is applied perpendicular to the plane of these using some electromagnet or permanent magnets also. 1930s की डिवाइस है ये. अगर आपने साइंटिस्ट के नाम सुने, लॉरेंस डिजाइनड इट. लॉरेंस गॉट नोबेल प्राइज फॉर डिजाइनिंग दिस इन 1939. तो इस डिवाइस को डिजाइन करी. मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाया परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दीस. यहाँ पे सेंटर में there can be a source of charged particle which is to be accelerated. पार्टिकल एक्सेलरेटर है तो सोर्स जहां से मतलब चार्ज पार्टिकल निकलेंगे तो कोई भी रेडियो एक्टिव सोर्स हो सकता है. अगर आपने अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट करना है तो सेंटर में एक ऐसा रेडियो एक्टिव सोर्स होता है जो अल्फा पार्टिकल एमिट करेगी. अल्फा पार्टिकल पे चार्ज पॉजिटिव, इट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द डी हैविंग नेगेटिव पोटेंशियल. तो अगर इस डी की नेगेटिव पोटेंशियल है वो इस डी में एंटर कर जाएगा. इसे हॉलो मेटालिक डीस. हॉलो मेटालिक डीस मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा. कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है. तो हमने हॉलो मेटालिक डी ली थी, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है. Once it enters this D, magnetic field is acting perpendicular to the velocity of the charged particle. Velocity इस डायरेक्शन में है. मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स है, V क्रॉस V. फोर्स अपवर्ड एक्ट करेगी. मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है तो पाथ फॉलोड सर्कुलर. इस पे अपवर्ड फोर्स एक्ट करेगी और ऐसे सर्कल में मूव करेगा. सेमी सर्कल पूरा करने में टाइम कितना लगेगा?
तो सर्कल का फॉर्मूला हमने लिखा था 2πm/क्यूबी। तो सेमी सर्कल पूरा करने का टाइम πm/क्यूबी। इट इज डिजाइंड इन सच अ वे दैट जितने टाइम में सेमी सर्कल पूरा करेंगे, सेमी सर्कल पूरा करने का टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है? स्पेसिफिक चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड पे। आपने जैसे अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट करना है तो आप देख लो कि वो सेमी सर्कल कितने टाइम में पूरा करेगा। सेम टाइम के बाद उनको जो ऑसिलेटर लगाया है वो अपनी पोलैरिटीज बदलेगा। मतलब जैसे ही इसने सेमी सर्कल पूरा किया, दिस डी बिकम्स नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगी। अब जब ये डी नेगेटिव होगी, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस पॉइंट में पहुंच जाता, इट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स, तो इस डी में आ जाएगा। जब ये रीजन क्रॉस कर रहा होगा, इट्स मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज है हायर टू लोअर पोटेंशियल, हायर टू लोअर पोटेंशियल, तो दैट मींस इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी कम होगी? कम हो जाएगी। जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी उतनी काइनेटिक, दैट मींस जब उसने दोनों डीज के बीच में क्रॉस किया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। हमारे पास मैग्नेटिक में रेडियस का फॉर्मूला था R is equals to md/qb। जितने टाइम में इसने सेमी सर्कल पूरा किया था उतने टाइम में पोलैरिटीज बदली। जब वो एक डी से दूसरे डी में एंटर किया, उसकी स्पीड बढ़ गई। स्पीड बढ़ गई तो रेडियस ऑफ पाथ, तो उसने अगला सेमी सर्कल थोड़े से बड़े रेडियस में पूरा किया। फिर जैसे ही उसने सेमी सर्कल पूरा किया, ये डी नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ऐसे मूव करना शुरू हो जाएगा। जब भी वो डीज के बीच में से क्रॉस करेगा, स्पीड थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। दैट मींस इट्स अ पार्टिकल एक्सेलरेटर, स्पीड बढ़ रही है। जब सफिशिएंटली हाई स्पीड हो जाएगी तो हम यहाँ पे रिफ्लेक्शन प्लेट लगाएंगे, विंडो। अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और विंडो पे मैंने नेगेटिव पोटेंशियल दी तो विंडो विल अट्रैक्ट द चार्ज, और ये यहाँ से इसको बाहर निकाल लेंगे। तो इसका प्रिंसिपल अगर आपने लिखा है, प्रिंसिपल क्या बनेगा? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज यूज्ड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज यूज्ड टू मेक द चार्ज पार्टिकल मूव इन द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन एंड अगेन। कि मैग्नेटिक फील्ड से लेकर उसको घुमा के फिर उसी फील्ड में ला रहा है। पोलैरिटी कितने टाइम के बाद चेंज होनी है? जितने टाइम के बाद सेमी सर्कल पूरा करेगी। ये टाइम है πm/qb। अब इसमें आता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट नहीं कर पाते हम। उसका रीजन क्या लगता है? इलेक्ट्रॉन्स का मास स्मॉल है, लार्ज है, तो अगर उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगे, उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। तो एक्सेलरेशन ज्यादा होने का तो फायदा ही है ना, पार्टिकल एक्सेलरेटर ही तो है। इलेक्ट्रॉन है स्मॉल मास, इट हैज लार्ज एक्सेलरेशन as compared to proton, you can say 1837 times ज्यादा, क्योंकि उसका मास 1837 times कम है। It very quickly acquires speeds comparable to light. लाइट के कंपैरेबल अगर उसकी स्पीड पहुंच जाएंगी तो जो टाइम कांस्टेंट था ये वेरिएबल हो जाएगा, बिकॉज मास वेरीज विद स्पीड, और मास बढ़ता है स्पीड के साथ। तो मतलब अगर उसने सेमी सर्कल पूरा भी नहीं किया होगा, पोलैरिटी बदल जाएगी। So that's not how the cyclotron works. उसके लिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करना है तो you require a different kind of device, जिसको बोलते हैं सिंक्रोट्रॉन। सिंक्रोट्रॉन जो होता है फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर नहीं होता है, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है। मतलब इसमें एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही पोलैरिटी बदलनी है। सिंक्रोट्रॉन में होता है जब सेमी सर्कल पूरा करेगा तभी पोलैरिटी बदलेगी। अगर सेमी सर्कल पूरा करने का टाइम बढ़ रहा है तो पोलैरिटी चेंज करने का भी साथ में बढ़ेगा। तो इसको नाम इसलिए दिया सिंक्रोट्रॉन, बिकॉज इट्स सिंक्रोनाइज्ड मोशन। क्यों सिंक्रोनाइज्ड है? जब सेमी सर्कल पूरा करना है तभी पोलैरिटी बदलनी है। दूसरी इसकी डिसएडवांटेजेस में न्यूट्रल पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं हो सकते, बिकॉज अगर न्यूट्रल पार्टिकल है ना तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी ना मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। सो न्यूट्रल पार्टिकल्स कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड थ्रू इट। अब इसमें छोटे छोटे कंसेप्चुअल पूछ लेते हैं।
हॉलो मेटालिक डीज का रीजन, डीज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, सो से मैग्नेटिक फोर्स एक तरह की पाथ फॉरवर्ड सर्कुलर होगा, अगर सर्कुलर पाथ नहीं होता अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता तो। The solar apparatus is kept at very low pressure in vacuum because so that charged particle which is being accelerated does not collide with other charges or molecules. तो हमें इसमें वैक्यूम चाहिए, तो अगर गैस मॉलिक्यूल्स भी होंगे तो जिस चार्ज पार्टिकल को आप एक्सेलरेट कर रहे हो मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करके अपना पाथ बदलेगा, so it will not move in circular path then. So we perform the experiment at a vacuum chamber. हम कई बार लिख देते हैं very low pressure so that collision probability is small. And इसकी यूज कहाँ आता है साइक्लोट्रॉन? Particle accelerator, particle accelerator. Cyclotron is a particle accelerator. Used in collision experiments. Used in collision experiments. Electric field. Next paragraph. Electric field is used to increase the speed of charged particle, whereas magnetic field intensity is used to make the charged particle move in same electric field again and again. To make the charged particle move in same electric field again and again. Construction of cyclotron. Construction of cyclotron. Cyclotron consists of the following main parts. First is following main parts. First is magnet system. A large electromagnet. First is magnet system. A large electromagnet that creates uniform electric field. That creates uniform electric field of the order of 2 Tesla is used to apply magnetic field on the moving charged particle. To apply magnetic field on the moving charged particle. Second is these. DEES लिख देते हैं इसको these. Two hollow metallic semicircular discs. Two hollow metallic semicircular discs. Two hollow metallic semicircular discs with a plane faces close to each other. With the plane faces close to each other and a small gap between them are used the D's are connected to high frequency. The D's are connected to
high frequency electric oscillator. The electric oscillator changes the polarities of these after a fixed time period. The electric frequency oscillator changes polarities of the Ds after fixed time period. इसके आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में लिख लो. The two Ds are placed in vacuum chamber. The two Ds are placed in vacuum chamber to prevent collision of accelerating particle with air molecules. To prevent the collision of accelerating particle with air molecules. Next part लिखो. Radioactive source. Radioactive source. It is placed at the center of gap between two Ds. It is placed at the center of gap between two Ds. And it is the source of charged particle to be accelerated. It is the source of charged particle to be accelerated. Last is extraction system. Extraction system. जो पार्टिकल एक्सेलरेट करना अल्फा पार्टिकल करना तो उसका सोर्स बीटा करना तो बीटा का सोर्स जो भी पार्टिकल एक्सेलरेट करे. Extraction system. It consists of a deflector plate and a window. It consists of deflector plate and a window through which accelerated charged particle will come out. Accelerated charged particle will come out. Next is theory and working. Theory and working. The radioactive source emits the charged particle to be accelerated. The radioactive source emits the charged particle to be accelerated. Radioactive source emits the charged particle to be accelerated. If it's a positively charged particle, if it is a positively charged particle, it gets attracted towards. It gets attracted towards D with negative potential. It gets attracted towards D with negative potential. Once it enters the D, no electric force acts on it. Once it enters the D, no electric force acts on it. Credit में reason लिख सकते हो. Because electric field inside hollow conductor is zero. Because electric field inside hollow conductor is zero. Once it enters the D, no electric force acts on it. Because electric field inside hollow conductor is zero. The magnetic field is applied perpendicular to the plane of these. Magnetic field is applied perpendicular to the plane of these
Therefore, magnetic force provides the centripetal force. Magnetic force provides the centripetal force for charged particle to move in circular path. Magnetic force provides the centripetal force for charged particle to move in circular path. For charge Q moving with velocity v. For charge Q moving with velocity v in perpendicular magnetic field. In perpendicular magnetic field. QVB will be equals to mv square by r. R will be mv by qv. QVB is equals to mv square by r or r is mv by qv. And the time taken to complete semicircular path निकालना है तो pi r upon v and v is यहाँ से QBR by n. कर लो पेन ले गया फिर वही रह गया. पास करना है आगे. So we say R is equals to mv by qb. And time taken to complete semicircular paths. So pi m upon qb. Mass बदल जाएगा ना? Because it very quickly acquires velocities comparable to light. The Einstein का formula and constant m is equal to not 1 minus v square by c square. The time in which the particle completes semicircular orbit is same as the time after which particle completes semicircular orbit is same as the time after which polarities gets reversed. Therefore, charged particle gets attracted towards. Therefore, charged particle gets attracted towards opposite D as it crosses the region between two Ds. Charged particle gets attracted towards opposite D as it crosses the region between two Ds. As it crosses the region between two Ds, the speed of charged particle increases. As it crosses the region between two Ds, the speed of charged particle increases. Therefore, it enters the opposite D. Therefore, it enters the opposite D with larger speed. Therefore, next semicircle will be of larger radius. Next semicircle will be of larger radius. The same process is repeated again and again. Same process is repeated again and again till particle acquires sufficiently large velocities
Will particle acquire sufficiently large velocities? और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? बिकॉज बेसिकली तो एनर्जी बढ़ा रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ एम वी स्क्वायर, और वी कितना था? क्यू बी आर बाय एन प्लस काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड इज हाफ एम वी स्क्वायर और half mv square or q square b square r square by 2l. Practically ऐसा डायग्राम है कि ऊपर नीचे तो मैग्नेट्स और बीच में डीज, तो इसमें पार्टिकल में कोई, बट वैसे देखने जाओगे वो तो इनक्लोज्ड है, कुछ पता ही नहीं चलेगा। जैसे सर्न का एक्सेलरेटर है, एनर्जी का फॉर्मूला और एनर्जी के फॉर्मूला पे, रेडियस पे, इन सब पे बेसिकली कुछ लोग कहते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला तुमने वैसे भी पढ़े थे एनर्जी को छोड़ के, बस आपको इस पे आपके पेपर में तो आ सकता है कि हॉलो मेटालिक डीज को यूज कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का रोल क्या है। जेई मेंस में भी आ सकते हैं, नीट में भी आ सकते हैं। Limitations. First is it cannot accelerate small mass particles. It cannot accelerate small mass particles like it cannot accelerate small mass particles like electron because small mass particle like electrons because they very quickly acquires speed comparable to the speed of light. They very quickly acquire speed comparable to the speed of light. Thus, the time in which particle complete semicircular orbit becomes variable. And fixed frequency oscillator cannot be used. Second is neutral particles cannot be accelerated. Neutral particles cannot be accelerated in cyclotron because न्यूट्रॉन को अगर एक्सेलरेट करना है तो वो नहीं कर सकते, बिकॉज न्यूट्रॉन पे ना तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी ना मैग्नेटिक लगेगी, बिकॉज नाइदर इलेक्ट्रिक नॉट मैग्नेटिक फोर्स, neither electric nor magnetic force acts on neutral particles. तो न्यूट्रल पार्टिकल्स को कैसे एक्सेलरेट करते हैं, उनकी स्पीड कैसे बढ़ाएं?